Yes. So look at the board. This is your exercise number 17.5. Clear? Find the median of the following variables. So these variables are given. Okay. So solution of the question number 1, and the variables are these one, and these are not in proper order. 25, 34, 33, 30, 20, 26, 36, 28, 19 and 34. So what I have told you in the first formula, first of all arrange them in which order? Ascending order or increasing order. So which is the smallest number? 30. So first of all 30. Which is the greater than 13? Second one is 19. Okay? And after 19, 20. After 20, which will be 25. After 25, 26. After 26, 28. After 28, this is 33, 34, and 34, and 36. Suppose that a number is repeating twice or thrice, then you should mention twice or thrice. अगर कोई नंबर 2 बार या 3 बार आ रहा है तो उसको 2 बार या 3 बार ही लिखना होगा. ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एक ही बार मेंशन कर दें. ये 34 2 टाइम है तो हमने इसको 2 टाइम लिखा, 3 टाइम होगा तो 3 टाइम लिखेंगे. अब सबसे पहले हम नंबर को चेक करेंगे कि ऊपर वाला जो नंबर गिवन क्वेश्चन में है और जो हमने मेंशन किया वो सेम है. कोई नंबर छूट तो नहीं गया है. हाउ विल वी चेक? काउंट देम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's clear? So first of all we should check the numbers. Now we will use of the formula, and that is n is equal to n plus 1 upon 2. So what is the value of the n? Number of variables. So there are how many numbers? 10. So friends, 10 plus 1 upon 2 is equal to 11 upon 2. It means 5.5th term. बोलेगी सर ये 5.5th term कौन सी होगी? It means 5th term plus 6th term upon 2. Now what is the value of the 5th term? 1 2 3 4 5. This is. So value of the 5th term is 26. And what's about the value of the 6th term? The value of the 6th term is 28 upon 2. So 26 plus 28 upon 2. So 26 plus 28 is equal to 8 and 6. 4. And this is 5. 54 upon 2 is equal to 27. So friends, your median is equal to 27. It's a clear? Very simple. First of all, the given variable should arrange in the ascending order. After, by using of the formula, m is equal to n plus 1 upon 2. n means the number of the variable. Number of variable in the given question is 10. The 10 plus 1 upon 2 is equal to 11 upon 2. And 11 upon 2 is equal to 5.5th term. And 5.5th term yeah, means 5th term plus 6th term upon 2. So 5th term value of the 5th term is 26 and value of the 6th term is 28. So 26 plus 28 upon 2 divided by 54 divided by 2 is equal to 27. So that's why we have got the median is equal to 27. Is it clear? Okay. So that's why we can find the value whenever frequency is not given. But what about whenever the frequency is given? So friends, whenever the frequency is given, we will use of the second formula, and you can see on the board what is the question. So look here, this is the question number 3rd of your book. Marks of it. So these are the marks. It means this is known as X. Number of student, this is known as F. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर ए टेबल. अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा किसका एक टेबल प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स.
The first column belongs to X, second column belongs to F, and third one is CF. Earlier I told you that whenever frequency is given, we should prepare the cumulative frequency. जब F दिया हुआ होगा तो हमें cumulative frequency बनानी पड़ेगी. अब इसका कैसे बनेगा? Look at the board. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50. Clear? Now frequencies are 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, and 8. Okay? Now friends, we have to prepare the CF. How will? Suppose that this is 2. So 2 will remain same. Now 2 will add in 8. So like this. 8 plus 2 is equal to 10. आपको जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको ऐसे नहीं लिखना है. आई एम जस्ट राइटिंग ओनली फॉर योर so that you can easily understand how will we get the 10. Okay, now 10 plus 6, 10 plus 16 is equal to 26. Now 26 plus 26 is equal to 52. Again 52 plus 20 is equal to 72. 72 plus 16 is equal to 88. 88 plus 7 is equal to 95, and 95 plus 4 is equal to 99. Clear? So this number is known as n. ये n जाना जाता है. और अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें सिग्मा f, so it is also 99. तो इन सब का टोटल और ये जो लास्ट का जो नंबर आएगा it should be same. Clear? Okay. Now, what is the formula? M is equal to n by 2. So, what is the value of the n? 99. So, 99 upon 2 and 99 divided by 2 is equal to 49.5. And earlier I have told you that we have to find out the value of the CF just equal to n by 2 or just greater than n by 2. So this is 49.5. So we will find it from here. This is 2, 10, 26. All three numbers are lesser than 49.5. ये सब इससे छोटे हैं. हमें क्या चाहिए? या तो इसके बराबर हो या इससे ग्रेटर हो. So which is the greater? 52. So 52 is greater than 49. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि 52 is just above 49.5. इस 49.5 से जस्ट ऊपर की वैल्यू ये है. ठीक है. और इसके कोरस्पोंडिंग वेरिएबल की वैल्यू, द कोरस्पोंडिंग वेरिएबल इज 30. कोरस्पोंडिंग वेरिएबल कहां से फाइंड करना? x में से. एंड द कोरस्पोंडिंग वेरिएबल इज 30. इसका कोरस्पोंडिंग वेरिएबल 30 है. सो दैट्स वे मीडियन इज इक्वल टू 30. सो हमारा मीडियन कितना हो गया फ्रेंड्स? 30 हो गया. क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फर्स्ट फार्मूले का पहले क्वेश्चन किया, सेकंड वाले का ये किया. लेकिन अभी तक जो हम लोगों के जो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन रेयर चांसेस में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं. वेरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में. सेक्शन डी में इस तरीके का नहीं आता है. सेक्शन डी में किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊं. दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो नाउ वी विल मूव इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.6. इट्स अ क्लियर? सो दिस इज 17.6. So we will solve the first question, and first question is this one. This one. Okay? So this is marks of 10, and now this is 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. That's why this is known as grouped. This is the grouped class. So friends, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80.
It's clear? So this is our class. Now frequency. What is the frequency? Frequency is this one. 6, 20, 44, 26, 3 and 1. Now we have to prepare the CF. 6. Earlier we have done 6 plus 20, 26. 26 plus 44 is equal to 70. 70 plus 26, 96. 96 plus 3, 99 and 100. It's a clear? Okay. So first of all, we have to find out the value of n by 2. So n is equal to 100. 100 upon 2 is equal to 50. So which is the value just above the 50? अब 50 से just ऊपर वाला value find करेंगे. So that is the 70. Okay friends? So this is known as median class. That is known as median class. And earlier what are we doing? हम पहले क्या कर रहे हैं कि इसके जस्ट अपोजिट वेरिएबल की वैल्यू मीडियन हो जाती है, लेकिन यहाँ 40 से 50 है तो मीडियन 40 होगा, 50 होगा या 41, 42, 44.5, 46.7 कुछ भी हो सकता है. Then how will we get the exact value? So we will use of formula number 3rd, and that is this one. N is equal to L plus n by 2 minus C upon F into H. Clear? Now put the value. What is the L? This is the L. So L is equal to 40. N by 2 we have got 50. What is the C? Earlier what I have told you, the value of the cumulative frequency just preceding the median class. तो ये median class है just पहले वाले की. CF लेना है. That is 26. And F means the frequency of median class. That is 44. And H is class size, and class size is given to 10. Now 40. One thing you should remember, you will add 40 in the last step. इस 40 को सबसे लास्ट वाली स्टेप में ऐड करना है, पहले नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी. 50 minus 26, 24 upon 44 into 10. अगेन अब कुछ स्टूडेंट यहाँ लाके ऐड कर देते, यहाँ भी नहीं ऐड करना. मैंने क्या कहा, लास्ट स्टेप. नाउ इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. 4 6 24, 4 11 45. 10 6 60 upon 11. Now 60 divided by 11. So how will we find? Look here. 40 plus 60 upon 11. मीडियन का वैल्यू फाइंड करने के लिए. अब 11 5 जा 55. रिमेनिंग 5 5 0 50. 11 4 जा 44. And again 5 times. So 40 plus 5.5 is equal to 45.45. This is the value of the median. Clear? Once again I am repeating. Whenever the grouped frequency distribution is given, friends, grouped mean like this: 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये group होना चाहिए. Frequency. First of all, we should prepare the cumulative frequency. और cumulative frequency कैसे बनाते हैं ये अभी पहले बताया मैंने, फिर बता रहा हूँ. ये जो frequency होती है इसको ऐड करते चले जाने. 6 plus 20 to 26, 26 plus 44, 70, 70 plus 26, 96, 96 plus 3, 99, 99 plus 100. First of all, n by 2, 100. n का मतलब क्या होता है, जो या तो आप इसका ये लास्ट वैल्यू बार बार बता रहा हूँ और या सिग्मा एफ. सिग्मा एफ ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम रहता है. n by 2 we have got 50. Earlier what I have told you that कि we have to find out the value just equals to n by 2 और just above n by 2. तो 50 के इक्वल या उससे अबव देखेंगे तो 6 छोटा है, 26 छोटा है, 70 ये अबव है, जस्ट अबव. इसके अलावा और कोई डिजिट था नहीं तो हमने 70 ले लिया.
एंड कोरस्पोंडिंग, वहां तो वेरिएबल था लेकिन यहाँ पूरा क्लास है 40 to 50, और 40 से 50 के बीच में आंसर कुछ भी हो सकता है, 41, 42, 43, 47, 48, 44.5, whatsoever. So we will use of the final formula. M is equal to L plus N by 2 minus C upon F into H. Now put the value. What is the L? The lower limit of the median class. N by 2, 50. C means the value of cumulative frequency just preceding the median class, that is 26. And F means the frequency of the median class. Clear? Or one thing you should remember, that the lower limit, the value of the lower limit you should add in the last stage. So 40 plus 50 minus 26 upon 44 into 10. 50 minus 26 is equal to 24. 24 upon 44 into 10. इसको सिंपलाइज किया, 4 से कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया 6 upon 11. तो 6 10 is 60 upon 11. Now 60 divided by 11 is equal to 5.45. तो 5.45 plus 40 is equal to 45.45. अब आपको ध्यान रखना, जैसे आपने you have taken the median class is 40 to 50, तो हमारा जो आंसर है वो इसके बीच में आना चाहिए, 40 से छोटा नहीं आना चाहिए और 50 से बड़ा नहीं आना चाहिए. सपोज दैट अगर आपका आंसर लेसर देन 40 एंड मोर देन 50 आ रहा है, इट मीन यू हैव सम मिस्टेक, आपने कोई ना कोई गलती कर दिया है जिसकी वजह से आपका आंसर सही नहीं आया, तो आप उसको एक बार कैलकुलेशन को दोबारा से चेक कीजिए. तो ये हमारे पास में था मीडियन. That's all the median. अब इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, मोड. So we will discuss about the mode in our next class. Thank you.